everybody, welcome back to another video. Hope you geeks and nuts are doing absolutely fantastic. Recently मैंने start किया अपने channel पे travel series about Almaty, winter in Kazakhstan, and this is the last video in that playlist in that series. And यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि how you can plan a trip to Almaty, trip to Kazakhstan, कौन-कौन से इसमें cost involved होते हैं, flights, hotels, currency, guides, tourist attraction, all sort of things. Thank you for loving the travel vlog series. This was the first time जहाँ पे मैंने travel series travel vlog किया है. I'm sure you're gonna continue your support and आगे जाके we're gonna get better at travel vlogging and travel series. So I'm also just learning. But इस वाली वीडियो में चलो बात कर लेते हैं कि कजाकिस्तान का ट्रिप कैसे प्लान करें, वहाँ पे क्या क्या जगहें हैं apart from what I showed in the vlog जहाँ हम लोग नहीं गए, करेंसी एक्सचेंज का कैसे रहता है, होटल्स वगैरह, all those things. So I have divided this video in all the sections so you can see these chapters and you can skip to wherever you want. Okay, before we start the video, let me give you a fun fact. Kazakhstan के लिए Indians don't need any visa. So if you're having an Indian passport and you're traveling to Kazakhstan, whether Almaty, Astana or any other city, you can go there visa free and live there for I think 30 days. So that makes the trip even more convenient, even more cheap. So that's why Kazakhstan is a really great destination to go because it's visa free for Indian passport holders. So let's start with the very first one, and that is what is the best time to visit. So Almaty या फिर Kazakhstan in general, you can visit all around this year, and best time visit करने का क्या होगा, that depends on what you are looking for. For example, हमारे case में we specifically want to go there to see the snowfall, to enjoy winter sports, skiing, snowboarding and snowfall देखना. So that's why we decided to go in winters. But usually if you ask anyone, वो बोलेंगे कि best time जो होता है वो आने का है वहाँ पे fall, because the colors are really beautiful, the weather is amazing. So if you want to go to the fall season, I would recommend start planning August से October में Almaty जाने का. And if you are like us and you want to enjoy winters, then you can go in December, in early January. If you want to enjoy extreme winters जहाँ पे snowstorms वगैरह आपको देखने का अगर शौक है, I'm not sure अगर किसी को होगा या नहीं होगा, but nevertheless February में काफ़ी वहाँ पे winter रहती है, January and February starting में. That's what I heard from local people. So yeah, Almaty, Kazakhstan, like all those destination in this time, year around you can go, you can plan, but depending on what mood you are in, if you are into photography and you want a lot of colors in the city, lot of hustle bustle, fall is the best time. विंटर में एज मैंने मेंशन किया था अपने कुछ व्लॉग्स में भी कि कुछ रोड्स एंड कुछ डेस्टिनेशन यू कैन फाइंड क्लोज्ड. सो जस्ट मेक श्योर यू डू ऑल दिस रिसर्च. अगर कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे आपको जाना है एंड वो अगर विंटर में क्लोज है, सो अवॉइड दैट. सो या बेस्ट टाइम टू विजिट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सेकेंडली चलो बात कर लेते हैं फ्लाइट्स की. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, सो दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं कजाकिस्तान की, अलमाटी की. आई एम नॉट श्योर अगर कोई और सिटी से भी है, बट आई एम डेफिनेटली दिल्ली मुंबई से मैंने चेक किया है, यू हैव डायरेक्ट फ्लाइट्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स रियली चीप, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. अगर आप अपना ट्रिप 2 से 4 महीने पहले प्लान कर सकते हैं, so guess what, you can book flight for as low as 16,000 return for one person. So सिर्फ एक साइड की 8,000 की फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं कजाकिस्तान की. So you can look out on Google Flights, Kayak, Skyscanner, not sponsored by anyone, but these are all the services that I use. If you are flying from anywhere else, so you can look that as well. Delhi से I think flight 3.5 घंटे की है, मुंबई से it's around 4 घंटे की, so you can book that up. बेस्ट पार्ट ये है कि अपना एडवांस में बुक करके रखो, क्योंकि बहुत ही चीप मिलती हैं फ्लाइट्स इफ यू बुक 2 or 3 months in advance. द फ्लाइट सर्विस दैट गो फ्रॉम इंडिया इज आई थिंक फ्लाई एरिस्तान, जिसको एयर अस्ताना भी बोलते हैं, एंड दे बोथ वर्क इन कोलैबोरेशन. बट आई थिंक रिसेंटली इंडिगो एंड सम अदर फ्लाइट्स हैव आल्सो अनाउंस्ड मे बी एयर इंडिया, सो डू चेक दैट आउट. फ्लाई एरिस्तान जो है वो एक चीप बजट फ्रेंडली फ्लाइट सर्विस है. सो दे ओनली प्रोवाइड 5 kg का कैबिन बैग. इफ यू वांट एडिशनल बैगेज तो आपको सेपरेट परचेज करना पड़ता है. So look that out and make sure you book in advance to save some extra bucks. Now let's talk about hotels. Similarly to flights, hotel भी काफी cheap हैं. It's not that expensive compared to European cities. हालांकि feel पूरी यूरोप वाली मिलने वाली है, पूरा जर्मनी रशिया वाली फील मिलने वाली है, बट एट अ वेरी मच बार्गेन. सो होटल को भी पहले एडवांस में बुक कर लो. वी यूज booking.com टू बुक होटल. होटल का टूर, अपना रूम टूर एंड आसपास की विसिनिटी मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में शेयर किया है, सो यू कैन चेक दैट आउट इन द सेम सीरीज. सो बेसिकली हमें होटल पड़ा था अराउंड 1 वीक का अराउंड 35-40,000, विच इज़ नॉट दैट बैड गिवन बहुत सारी सर्विसेज थी उसके अंदर, एंड द लोकेशन वॉज रियली गुड. सो यू कैन बुक होटल्स इन booking.com. इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, बहुत सारे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, विच ऑल्सो प्रोवाइड सम प्राइवेट रूम विच हैज सम बंकर बेड. सो
depending on what you want, you can book that hotels. Of course 5 stars तो वहाँ पे है ही, so whatever your preference is, you can book that. Booking.com की एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि you have to pay at during the check-in time. You can also pay in advance, but we prefer paying in the check-in time. होटल देख के अगर समझ नहीं आया, so we can negotiate some deals. So you can use that. Again, not sponsored, but that's what we used. ऑलराइट, सो फ्लाइट ले ली, होटल बुक करा लिया, बट लैंड करने के बाद होटल तक कैसे जाना है. सो फ्रॉम एयरपोर्ट देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच होटल. यू कैन टेक local buses, local transport. I think metro is also available. You can also take local taxi, but make sure कि आप किसी भी एयरपोर्ट से बाहर निकल के local taxi बुक मत करना, because a lot of these people are part of mafia and थोड़ा सा scam है वहाँ पे. डरा नहीं रहा हूँ, but that's what we learned from local people. So हुआ क्या था, अभी recently किसी ने I think कोई यूरोपियन टूरिस्ट ने होटल से फ्लाइट से निकल के होटल के लिए अपनी कैब बुक करी without using any app, without using any government services, and he said that will take 3500 tenge. 3500 tenge is the local currency of Kazakh. But when he dropped them into the hotel, उसने बोला कि हमने बोले थे 3500 US dollars. So that the kind of scam that we have heard of, and उसने फिर चाकू वाकू निकाल लिया. So that was I would say not a good experience for them, but local really suggest to not use that services. So ये सब सुनने के बाद ही एंड ये सब रिसर्च करने के बाद ही व्हाट आई डिड, मैंने अपने होटल को पहले मैसेज कर दिया था कि वी वांट अ पिकअप सर्विस फ्रॉम एयरपोर्ट. सो वो लोग अगेन नाम हम लेके अपना एयरपोर्ट पे आपको मिलते हैं, एंड दे कैन ड्रॉप यू टू योर होटल. दैट इज होटल सर्विसेज. वो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा था, बिकॉज वी लेटर फिगर आउट कि यहाँ पे एक ऐप भी है जस्ट लाइक ओला उबर, and that app is called Yandex. So you can download Yandex, and rest assured Yandex में अभी तक कोई scam नहीं है. We have used it for all the taxi bookings in Almaty, and we find it very useful. The drivers are very friendly. So you can download this Yandex app, and इसको use करके you can reach to your hotels and any destination in Almaty. अच्छा, टैक्सी की बात करिए तो साथ में एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि Yandex ऐप के साथ Google Translate भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना, because the majority of population in Almaty in Kazakhstan, they either speak Russian or they speak Kazakh. As I mentioned in one of my previous blog, Kazakhstan जो था वो USSR यानी सोवियत यूनियन का पार्ट था before 1991. So still they have very close ties. So बहुत सारे रशियंस वहाँ पे आते हैं. रशियन इज अ लैंग्वेज. सो गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लेना, बट उसके साथ साथ गूगल ट्रांसलेट में ऑप्शन होगा रशियन और कजाक को ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए. सो इवन इफ यू डोंट हैव इंटरनेट, यू कैन स्टिल इंग्लिश में लिख के आप उसको दिखा सकते हो कि ये दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स वेयर आई वांट टू गो. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. सो मेक श्योर यू डाउनलोड एटलीस्ट दिस टू ऐप, Yandex एंड गूगल ट्रांसलेट. सो होटल में चेक इन करने के बाद या फिर एयरपोर्ट पे ही देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू डू. वन इज द करेंसी कन्वर्जन एंड द सेकंड इज बाइंग अ सिम कार्ड. सो करेंसी कन्वर्ट करने के लिए यू कैन यूज सर्विसेज एट एयरपोर्ट. मैंने रेट चेक किए थे एयरपोर्ट पे एंड सिटीज़ में यूजुअली ऑलमोस्ट सेम रेट मिलता है. सो it doesn't really matter, and especially winters में it's really hard कि बाहर जाओ and currency exchange specially करने जाओ दुकान ढूंढ के. So I would recommend कि आप एयरपोर्ट से ही करेंसी चेंज करा लेना. एंड as soon as you exit the airport, एक ऊपर एस्केलेटर जा रही है, एंड आई फाउंड कि वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके जो शॉप्स हैं दैट वर रियली गिविंग गुड रेट. सो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एक INR के मिलते हैं 5.3 कजाक टेंगे. सो कजाक टेंगे इज द लोकल करेंसी. डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर फ्लाइंग, गूगल पे एक बार रेट चेक कर लेना. सो थोड़ा सा ऑफकोर्स आपको कम ही मिलता है, बट yeah, you can easily convert currencies. And the one thing to keep in mind here is कि best ये रहेगा कि आप इंडिया से ही US डॉलर्स लेके जाओ. US dollars will give you the best exchange rate compared to INR. INR मैं लेके गया था, बट साथ में US dollars भी लेके गया था. So that's what I usually do when I'm traveling. US dollars का best rate मिलता है all around the world for currency conversion. So you can also do that. So US dollars आप इंडिया से ही लेके जा सकते हो. It's available in all major cities. You just need your PAN card, passport, air tickets and visa, and you are good to go. सो ये तो बात हो गई करेंसी कन्वर्जन की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम. सो अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि एयरपोर्ट से एग्जिट करके यू विल फाइंड लॉट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड सिम, बट मैंने वहाँ पे कंपेयर किया था, जो नीचे से मिल रही थी दैट वाज एक्सपेंसिव. सो वी टुक द एस्केलेटर एंड मूव्ड अप, एंड ऊपर एक लोकल कन्वीनियंस स्टोर पे एयरपोर्ट पे ही हमने जो सिम ली वो थी फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड Beeline. एंड Beeline की जो सिम मुझे मिली थी वो मिली थी अराउंड 1300-1400 रुपीज़ इंडियन, एंड उसमें अनलिमिटेड डेटा था फॉर 7 आई थिंक 10 days, एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर आवर ट्रिप. मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ अनलिमिटेड डेटा ही लेना, बट ऑफ कोर्स बजट के अंदर ही. सो Beeline वाज माय गो टू network in Kazakhstan, and it was really smooth, कोई दिक्कत नहीं है. So you can definitely buy that one after comparing to other carriers that are available to you.
बात कर लेते हैं टेम्परेचर एंड क्लोथ्स की. सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन किस सीजन में आप ट्रैवल कर रहे हो. हमने ट्रैवल किया था विंटर में, सो वी पैक्ड फॉर विंटर सीजन एंड स्पेशली बिकॉज वी वांटेड टू डू स्नो ट्रेक्स एंड स्नो एक्टिविटीज, सो हमने उसके लिए भी प्रिपेयर किया था. We took snow contact shoes, we took multiple layers, base layer, fleece, उसके ऊपर waterproof jacket, beanies, gloves, thermal pads. So I have shown this in somewhere along my previous blog, so you can check that out. बट ऑफ कोर्स जब भी आप जा रहे हो चेक कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर रहने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही अपने कपड़े लेके जाओ. टॉकिंग अबाउट फूड की थोड़ी दिक्कत रह सकती है, स्पेशली इफ यू आर वेजिटेरियन, बिकॉज कजाकिस्तान इज अ प्लेस वेयर पीपल रियली प्रेफर ईटिंग हॉर्स मीट. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, आई वुड रिकमेंड कि आप अपना फूड खुद लेके चलो. सो इंडिया से इफ यू आर फ्लाइंग, यू कैन टेक रेडी टू ईट हल्दीराम के आई थिंक कड़ी चावल, राजमा चावल सब अवेलेबल आज की डेट में. सो दैट्स व्हाट वी ऑल्सो डिड. Easily मिल जाते हैं आजकल हर जगह. Even if you are from outside India somewhere, you can easily get this ready to eat meals, and this also saves a lot of cost, but at the same time if you're vegetarian that becomes a must have. Google पे चेक किया था मैंने, there are few Indian restaurants in Almaty, but winter में as you know easily बाहर जाने का मन नहीं करता. So if you are a person that is not comfortable eating non-veg, then I highly recommend that you carry your veg ready to eat food with you. Talking about guides and local sightseeing, so बहुत सारे day tours available हैं, बहुत सारे destinations available हैं जो आप book कर सकते हो online different apps use करके. You can also ask your hotel कि वो लोग गाइड प्रोवाइड करते हैं. हमारे होटल हर जगह के लिए गाइड प्रोवाइड कर रहा था, दो वी डिडंट ऑप्ट फॉर दैट अदर देन बिगल माटी लेक, क्योंकि एज मैंने मेंशन किया था पुरानी अपनी फर्स्ट बिगल माटी लेक वाली वीडियो पे, जो बिगल माटी लेक है वो विंटर में पूरी फ्रीज हो जाती है पूरा रास्ता. सो इट्स नॉट ईजी टू गो अप देयर. सो हमारा जो गाइड था ही वॉज ऑल्सो एन एवलांचर वर्किंग एट बिगल माटी लेक. सो ही टुक अ प्रीमियम एंड ही टुक अस टू देयर, एंड बिना गाइड को पॉसिबल नहीं था बिकॉज दे हैड स्पेशल कार्स विद स्पेशल व्हील्स एंड स्पेशल चेन्स. उसके अलावा हमने कहीं और जाने के लिए गाइड नहीं लिया. द सिटी इज़ प्रिटी मच एक्सेसिबल फ्रॉम टैक्सी, फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यांडेक्स हमने यूज़ की थी फॉर लोकल कम्यूट, एंड एज आई मेंशन गूगल ट्रांसलेट है तो कोई दिक्कत नहीं आती. पीपल आर रियली फ्रेंडली. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम डे ट्रिप्स. अगर आप समर्स में या फिर फॉल सीजन में जा रहे हो, there are a lot of lakes, there are a lot of multiple day trips as well. एक canyon भी है which we didn't do this time, but yeah, do check out on internet all the local sightseeing and ask your hotel if you're looking for a guide. Last but not the least, let's talk about the culture. So people are really friendly. Definitely Kazakhstan के जो लोग हैं they are really friendly. They come from a nomadic background. They are very much tied to their roots and culture. उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से यू माइट फील कि दे आर एक्टिंग कोल्ड, बट ऐसा नहीं है. दे आर रियली हेल्पफुल. They always go an extra mile to help you out. Like for example, we booked a taxi to a wrong place because of language problem, but our driver from Yandex still took us to the right place and didn't charge us extra. Even we wanted to, give some tip. He was very helpful. And जो हमारा बिगल माटी लेक वाला गाइड था, he was connected to us on WhatsApp and he was recommending you can go here, you can go here, you can celebrate New Year at this location and that. So people are really friendly. You just need to, respect their culture, respect their language, and treat them good, which is like the basic human nature, and everyone must do that. Apart from that, as I mentioned कि जो Kazakhstan है that was a part of Soviet Union, and Soviet Union was a communist state. So यहाँ पे बहुत सारी community related चीज़ें बहुत होती आई हैं over the many years. So one experience that I would really recommend is going to a public community spa. It's a better name. So in Almaty there is a place called Arasan. I'm not sure कि इसकी वीडियो में डालूंगा या नहीं डालूंगा, but that was the best experience I ever had. So it's like a cultural thing where you go to different spa, hammam, Russian spa, and a public pool, and everyone there is like a community. So बहुत ही बड़ा एक building है where you can go and take different spas, and yeah, it's different for men and different for women, of course. But yeah, that's something that I would really recommend. I see if I have enough clips, I'll add another video for that one, but I'm not really sure if I'll do that. But do check out Arasan, and if you're comfortable with that, a community spa where everyone in the same room is taking sauna baths and things like that, you should do that. Apart from that, in culture, if you are going to some location like Oktober or any tourist place, there you can try that nomadic dress that Kazakh people used to wear back in the days, and they were also very good in falconry. So you can hold that eagle, hold the falcons that are available there. So yeah, all part of the culture. Do respect the culture, do respect local language, at least words like hello, thank you, bye, you should learn how to speak in Russian and Kazakh. But overall, the culture is really good. The city is really vibrant and the people are really friendly. So you will have a great time there.
So on that note, I think I have covered almost everything I wanted to do in this video. So if you're planning a Kazakh or Almaty trip, do let me know in the comment section. And if you need any help, you can reach out to me on DM on Instagram. So yeah, let's wrap this video. And on that note, I'm gonna see you in the next one.